about cell cycle and cell division, the growth and division is basic feature of the cell. We all are very well aware about it. Rather, we would say that every living organism has the capability of growing as well as getting divided. So, when we talk about cell cycle, it has two aspects, which is cell growth as well as cell division. For cell growth, cell takes 95% of its time, whereas for cell division, it is a very small stage, but a very dramatic stage where it takes less than 5% of its time. When we say it is dramatic, meaning there are too many different types of events that take place during cell division. When we talk about cell growth, it basically is talking about a phase, very famous phase, which we call it as interphase, which is further divided into three more stages. That is G1 phase, S phase, and G2 phase. Right? It is divided into three stages, which is G1, S, and G2 phase. So when we talk about G1 phase, S phase, and G2 phase, G1 phase is also called as first growth phase. G2 will thus be called as second growth phase, and S phase is referred to as synthesis phase because this is the phase where you have DNA synthesis takes place. The next stage, which is cell division, when we talk about here, we are talking about the M phase. So when we talk about M phase or mitosis phase, which is commonly referred to as, it is divided into two more phases, which is karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, where karyon means nucleus, and cyto is where we talk about cell. We have discussed this in the cell, the unit of life. That cyto prefix is nothing but what we call it as cytokinesis. Correct. It is basically cell. Now, when we talk about karyokinesis, karyokinesis is nothing but further divided nuclear division, which is further divided into four more stages, which is can be memorized as PMAT, prophase, metaphase, anaphase, and telophase, where prophase is the longest phase of cell cycle, specifically M phase, and anaphase is the shortest phase of karyokinesis or N phase. All right, beta? Going slightly more into details to understand, human cell takes around 24 hours to get divided, of which interphase takes place more than 90% is what we say, which is it takes almost 23 hours to get completed. This 23 hours is distributed into G1, S, and G2, where G1 is 11 hours, S is 8 hours, and G2 phase is of 4 hours. M phase is occurring only for 1 hour, meaning out of 24 hours, there's just 1 hour where actually you have cytokinesis and karyokinesis that is occurring, meaning actually you have cell division that is taken place. All right, beta? Like in humans, it takes 24 hours. In bacterial cells, specifically E. coli, you have 20 minutes taken up. And in yeast cell, it is 90 minutes that is taken up, which is wrongly written over here. It is not 15 hours, it is 1.5 hours. Okay, it is 1.5 hours that it takes. The time taken by a cell to get divided completely depends on the complexity of the cell. If the cell is very, very complex, it will take more time to get divided. If the cell is less complex and simpler, it will take lesser time to get divided, as we can see in this particular data. Going ahead, question is that why do cell need to divide? What is the reason for cell to get divided? Why does cell decide to get divided? So there are two main reasons for it to get divided. Very firstly is the surface volume ratio. Very firstly, we have surface volume ratio. When there is lesser surface area but more volume, that is when the cell decides that there's an abnormality. So I will have to get divided and balance this ratio. Secondly, when the karyoplasmic ratio, sorry, also called as nucleocytoplasmic ratio, also called as nucleocytoplasmic ratio. When the nucleocytoplasmic ratio gets disturbed or gets abnormal,
That is when the cell decides to get divided. यानी कि जब अगर ये हमारा सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो ये तो बहुत नाइंसाफी हुआ दैट इतना छोटा सा न्यूक्लियस है और इतना बड़ा सेल है. So the cytoplasmic nuclear cytoplasmic ratio is not distributed evenly. Thus the cell will decide to get divided. Or else if you have this as your cell and this as your nucleus, this is the nucleus, let's say. Again, it is unfair because the cell is very small as compared to the size of nucleus. So immediately cell decides to get divided. This is the ideal ratio that a particular cell is expected to have, which is nucleocytoplasmic ratio. This is a small formula which is giving us an nucleocytoplasmic ratio ka equation where Vn is volume of nucleus, Vc is volume of cell. So volume of nucleus upon volume of cytoplasm is nothing but nucleocytoplasmic ratio that we are discussing or talking about. I hope the concept is clear so far. So these are two major reasons why cell decides to get divided. All right, beta. Going ahead, this is how the cell cycle looks like. Okay, this is one of the very important diagram that you need to memorize or you need to remember. Now, when we talk about this particular diagram, as we can see over here, that the this entire chunk is interface. It is referred to as interface, whereas this entire chunk is referred to as M phase. And interface is further divided as G1, S, and G2 phase, where G1 can be called as gap 1 phase, or it is also called as we've discussed, it can also be called as first growth phase. S phase is called as synthesis phase. G2 phase can also be called as second growth phase. And then, of course, you have an M phase which is existing, divided into the karyokinesis chunk. This chunk that we observe up till here, this much, is nothing but karyokinesis beta, correct? So we will become a little bit more sophisticated. This entire chunk will be referred to as karyokinesis, whereas this entire chunk will be nothing but cytokinesis, which is where cell is getting divided. All right. Now, when we talk about the G1 phase, it can also be called as post-mitotic phase. It can also be called as post-mitotic phase. Why do we call it as post-mitotic phase? Is because it occurs after mitosis, thus it is also called as post-mitotic phase. Whereas this will thus called as pre-mitotic phase because it occurs prior to mitosis. It can also be identified as pre-mitotic phase. Since G1 phase occurs before S phase, so it is pre-synthetic phase, and G2 occurs after synthesis phase, it can also be referred as post-synthetic phase. These are certain terminologies that we needed to understand. Coming up to understand about interphase in a little bit more detail. When we talk about interphase beta, as we've said that it contributes to 95% or more than 95% of the time. So if we talk about human cells, it is contributing to almost 23 hours in human cells. It contributes to 23 hours of human cells. What exactly happens in this? So when we talk about very first phase, which is G1 phase, in this particular phase, in this G1 phase, there are two important events that is occurring. One is where you have cell organelles getting divided, and two is where RNA and protein synthesis takes place. You have almost every cell organelle getting divided during G1 phase, except for सारे cell organelle divide हो जाएंगे, except nucleus and centriole. Nucleus and centriole do not get divided in this particular phase. बाकी सारे इस phase में divide हो जाएंगे, ठीक है? Which includes your mitochondria. Yeah, okay. This except for nucleus, centriole, mitochondria, and chloroplast. ठीक है बेटा?
माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट के अलावा के जितने बचे हुए सारे होंगे वो सब इस फेस में डिवाइड हो जाएंगे। अब इसके अलावा और क्या ही बच गए सर, काफी सारे बच गए बेटा। इसके अलावा वी हैव लाइसोसोम, वी हैव वैक्यूल्स, वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी हैव सीलिया फ्लैजिला, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, तो वो सारे चीजें जो है वो G1 phase में डिवाइड हो जाएंगे, along with of course DNA, sorry, along with of course RNA and protein synthesis that occurs during this phase. S phase is where synthesis takes place, so there is duplication or replication of DNA which occurs in nucleus of the cell. During this period of time when we say that DNA is getting replicated, it is only DNA that gets replicated. There is no chromosome getting multiplied. What does that mean, sir? That means during this particular phase, we have discussed this earlier. You have this as your chromosome. ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। एक ही सेंट्रोमियर होने की वजह से इस पूरे चीज को हम एक ही क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे डीएनए मल्टीप्लाई हो जाने की वजह से वो डीएनए एक सेंट्रोमियर एक क्रोमैटिड में नहीं रह सकता, इसलिए वो डिवाइड हो जाता है दो क्रोमैटिड में, लेकिन सेंट्रोमियर तो अभी भी एक ही है। So still we have one single chromosome, but now we have two chromatids. All right, बेटा। So initially normally हमारे सेल में ऐसा कुछ होता है, S फेस में जाने के बाद हमारे क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे बदल जाते हैं। ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम्स को, ये दोनों क्रोमोसोम्स को we will call it as sister chromatids. We call them as sister chromatids. All right, बेटा। Going ahead, during this particular phase you also have, that is S phase के दौरान we also have centrioles which gets duplicated, which of course occurs in cytoplasm. यानी डुप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो दोनों साइटोप्लाज्म में एज वेल एज न्यूक्लियस में अकर होगा। ठीक है, गोइंग स्लाइटली मोर डिटेल में, इस फेज के दौरान हिस्टोन प्रोटीन्स का भी डुप्लीकेशन होता है। हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन क्यों होगा? हिस्टोन प्रोटीन्स का डुप्लीकेशन होगा बिकॉज जब डीएनए मल्टीप्लाई हुआ है तो उनका पैकेजिंग तो बनता है, और उस पैकेजिंग के लिए हमको हिस्टोन प्रोटीन का जरूरत होता है। तो अगर डीएनए मल्टीप्लाई हुआ तो हिस्टोन ऑटोमेटिकली उसके साथ ही डिवाइड होना चाहिए। अभी क्लियर बेटा? उसके पहले जीवन फेस में नहीं होगा। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर वो रिक्वायरमेंट जो हमें जीवन फेस के लिए, एस फेस के लिए चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो जीवन फेस में बनाई जाएगी। All requirements for S phase will be synthesized during G1 phase. All right, beta. And all the requirements of M phase will be synthesized in G2 phase. And that's why during G2 phase, you have kinase protein, you have tubulin protein. That is nothing but group of proteins, and RNA synthesis takes place. Along with that, you have mitochondria and chloroplast, which is duplicated during G2 phase instead of G1 phase. I hope the concept is clear, beta. S phase, we've discussed that number of centromere is equal to number of chromosomes. ये basic law हमें याद रखना है, तो ही हमारे इस particular chapter के सारे numericals जो है वो अच्छे से solve कर पाएंगे। Number of centromere is equal to number of chromosomes, as well as you can also memorize this to be as number of DNA is equal to number of chromatids. ठीक है, नंबर ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, ये भी हमें याद रखना होगा बेटा। ठीक है, गोइंग स्लाइटली मोर है, जब हम जीवन फेज का बात करते हैं या सेल साइकिल का बात करते हैं, अगर सपोजिटली एक न्यूमेरिकल काफी बार कॉमनली पूछा जाता है कि अगर जीवन फेज में डीएनए का अमाउंट इज 1 पिकोग्राम, the S phase में that will rise twice the amount, so you automatically have 2 picogram of DNA during S phase. G2 phase में it still remains the same, so it will still be 2 picograms. M phase में वो reduce होकर half हो जाएगा, मतलब the number of DNA has been separated, it is distributed equally to the daughter cells, and thus it will come back to nothing but 1 picogram during G1 phase. Are we clear, beta? So
the number of chromosomes remains same, but the amount of DNA multiplies. During which phase beta? During S phase. Are we clear? डीएनए अगर मल्टीप्लाई हो गया है तो ऑटोमेटिकली क्रोमैटिड भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा. वही लॉजिक हम ऊपर पढ़े. हर वो सेल जो माइटोसिस करने की काबिलियत रखता है उन सेल्स को हम माइटोसाइट कहेंगे, और हर वो सेल जो मियोसिस करने की काबिलियत रखता है उसे हम कहते हैं मियोसाइट्स. ये एक इम्पॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है या इम्पॉर्टेंट टर्म है, याद रखना होगा आपको इसे. ठीक है. अगर हमें माइटोसिस पढ़ना है तो कौन सा ऐसा सेल है जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं, तो इट इज रूट टिप ऑफ अनियन सेल्स. और मियोसिस के स्टडी के लिए हम जनरली फ्लावर के एंथर्स का स्टडी करते हैं, विच इज नथिंग बट पूरा मियोसिस प्रोसेस एंथर्स में होगा, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. ठीक है. सो एंथर सेल्स आर 2n इन नेचर, इट विल बी गिविंग अस n नंबर ऑफ सेल्स. अब ये हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है. दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the amount of DNA that is seen in the different phases of cell cycle. Specifically, we are discussing here about mitosis. फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के बारे में बात करें. ठीक है. तो माइटोसिस के G1 फेज में 2C जो है वो 2C ही रहेगा, दैट इज 2C कंटेंट ऑफ डीएनए. S phase में वो धीरे धीरे rise हो जाएगा and it will reach up till 4C. So it started from 2C and reaches up till 4C. G2 phase में it retains to 4C, it remains constant. And M phase में it again slowly and gradually comes down and finally comes to 2C. So that's how the graph looks like, and that is what the graph is explaining. Okay, this is what we are talking for single cell. Now, when you have this cell cycle, जब ये cell cycle हो रहा होता है, तब अगर ये हमारा सेल साइकिल हो गया कुछ इस तरीके से बेटा, तो इस सेल साइकिल में हमारे पास होगा एक एम फेस और लंबा सा, you will have M phase and this लंबा सा I phase. This is I phase and this is nothing but M phase. And this I phase is further divided into 3 more phases. As we know, it is divided into G1, S and G2. ठीक है बेटा. अब क्या सिनेरियो होता है जब सेल एम फेज से बाहर निकलता है, जब कोई सेल एम फेज से बाहर निकलता है तब उस पर्टिकुलर सेल के पास 3 ऑप्शंस होते हैं. या तो वो सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा, या अगर उसको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहेगा दोनों सेल्स में तो दो सेल्स विल डाई, दे विल नॉट सेलेक्ट टू मल्टीप्लाई फर्दर. थर्ड ऑप्शन इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर फॉर अस, व्हिच इज सेल अंडरगोस G0 फेज या फिर क्विसेंट स्टेज. ये G0 फेज या क्विसेंट स्टेज जो है बेटा वो G1 फेज के दौरान कभी भी आ सकता है. G1 फेज के दौरान कभी भी, जब कभी भी हमारे बॉडी में जरूरत होगा तो सेल जो है वो G1 फेज को छोड़ के बाहर निकलेगा और G0 फेज में चला जाएगा, जो होता है क्विसेंट स्टेज, जहां पे सेल जो होता है वो डिवाइड होना छोड़ के एक परमानेंट शेप और साइज को अचीव कर लेगा, प्लस एक परमानेंट फंक्शन को वो प्ले करेगा. समझे बेटा. G0 फेज एक ऐसा फेज है जहां पे सेल साइकिल जो है, सेल जो है वो उसका साइकिल छोड़ के बाहर निकलता है और एक पर्टिकुलर शेप, साइज और फंक्शनल रोल को प्ले करना शुरू कर देगा. दिस इज व्हाट वी मीन बाय G0 फेज. Is the cell metabolically active during this phase? The answer is yes. The cell has stopped dividing. वो inactive सिर्फ इसलिए है because there is no cell division that has happened. लेकिन metabolically the cell is still active. Like for example, you have liver cells, nerve cells, heart cells, जो divide नहीं होते continuously, जो डिविजन उनका छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके अंदर के मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यूसली चालू ही है, वो रुके नहीं. तो इस प्रकार का फेज जो है ये सेल्स में जनरली हमको दिखाई देता है. आर वी क्लियर. कुछ कुछ सेल्स ऐसे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लांट सेल्स में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हुआ और एनवायरनमेंट का डिमांड हुआ तो वो G0 फेज से वापस से G1 फेज में एंटर कर सकता है. बट दिस इज कंडीशनल, ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा. इट इज एब्सोल्युटली कंडीशनल इन नेचर.
Alright, beta. Going ahead, as we've discussed, cell exists. Cell exits from G1 phase and enters into inactive phase, which is what we call it as G0 phase. All right. Now, जब सेल साइकिल हो रहा है, जब सेल साइकिल में जा रहा है, G1 S, G2 M phase वो कर रहा है, so how does cell decide that okay, I have completed one phase of my cycle and I have to go to the another phase? How does cell decide whether all of the reactions that are occurring is currently occurring or not? सेल को कैसे पता चलता है कि सारे स्टेजेस उसने ढंग से कंप्लीट किए हैं? तो इसके लिए हमारे सेल्स के अंदर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं बेटा. देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स. नाउ व्हाट आर दीस चेक पॉइंट्स और रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स? ये कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. अब जब हम इन सेल्स इन प्रोटीन्स के बारे में बात करें, लेट्स सी कि ये काम कैसे करते हैं. चलो, जब हम जीवन फेज के बारे में बात करें, जीवन फेज में जो जो सेल को काम करना चाहिए, जब ये सारे चीजें कंप्लीट हो जाती है, तब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब सेल के अंदर लोकेशन जैसा कुछ नहीं होता, ये खाली हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है बस. जब जीवन फेज का सारा काम खत्म हो जाता है, तब सेल के अंदर दो प्रोटीन होते हैं, सीडीके एंड साइक्लिन. तो सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो होता है, मैसी हो गया ना, सीडीके विच इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और इन टर्न वो साइक्लिन को एक्टिवेट करता है. जैसे ही साइक्लिन एक्टिवेट हो जाता है, मतलब इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाएगा. एक्टिवेट यानी कि बेटा इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाएगा. तो जैसे ही इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाएगा, साइक्लिन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है, तो सेल को पता चलता है कि हाँ भाई, हमारा जीवन फेज का जो जो काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट फेज पे जाना है. So that is when the cell will automatically move to the next phase of cell cycle, which is S phase. Now, this particular checkpoint, which is found between G1 and S, is called as G1S major checkpoints. All right, beta. Which checks what? So it checks nutrients, if there is any damage in the DNA, and the size of the cell. These two things are being checked during this particular or by this particular checkpoints. Now, likewise, अगर हम बात करें दूसरे चेक पॉइंट्स का, तो एग्जैक्टली वैसा ही एक और चेक पॉइंट हमारे पास है जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, जो G2 और M के बीच में होता है और एग्जैक्टली सेम काम करता है. सीडीके और साइक्लिन रहेगा, सीडीके साइक्लिन को एक्टिवेट करेगा, साइक्लिन एक्टिवेट हो जाएगा, जिस वजह से सेल को पता चलेगा कि एस फेस और G2 फेस के सारे काम खत्म हो चुके हैं और वो जाएगा M फेस के अंदर. ठीक है. एक और चेक पॉइंट होता है विच इज बिटवीन मेटाफेस एंड एनाफेस चेक पॉइंट. हालांकि इसके बारे में अभी तक हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आया या कुछ डिटेल्स हमें आज तक कभी पूछा नहीं गया है, बट दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. काम क्या करेगा? सेम काम करता है. इट इज चेकिंग द सेल साइज, न्यूट्रिएंट्स एंड डीएनए डैमेज इफ देयर आर एनी. ठीक है ना. एज फार एज दी सेल साइज इज कंसर्न, हमने इसके बारे में बात नहीं की है ज्यादा. सेल साइज जो होता है, यहाँ पे the cell size increases but nucleus size is same. यहां पर एस फेज के दौरान न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज होता है और सेल का साइज भी इंक्रीज होगा बेटा. जबकि यहां पर भी सेल इंक्रीज होते जाएगा, न्यूक्लियस का साइज विल नाउ रिमेन सेम जैसा था वैसा. यानी सेल ग्रोथ कंटिन्यूज इन G2 फेज. In this condition, if we have a question been framed, अगर हमें एक क्वेश्चन आया जहां पे वो पूछ रहा है कि किस फेज में सबसे ज्यादा सेल ग्रोथ हुआ होगा या सेल का साइज सबसे ज्यादा कौन से फेज में होता है, तो हमारा आंसर होगा G2 फेज. ये हमें याद रखना है. ठीक है बेटा. यहीं पे हमको पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जब वो मेटाफेज के दौरान काइनेटोकोर को अटैच होता है, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर को अटैच होता है, तो एक एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो एक्टिवेट हो जाता है.
ये कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो सेंट्रोमियर के डिवीजन को कंट्रोल करेगा, and also it will be responsible for decondensation of chromosomes once the chromatids are separated. All right बेटा, बाकी यहाँ पे CDK और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन के बारे में बताया गया है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So, अगर हमें सेल साइकिल के बारे में जानना है कि सेल साइकिल एग्जैक्टली क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesis of other constituents of cell and eventually gets divided. This is called a cell cycle. सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना होगा तो हर वो इवेंट जो सेल साइकिल के पहले, सेल साइकिल के दौरान और सेल साइकिल के बाद होता है उससे हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, सॉरी, हर वो पर्टिकुलर इवेंट जो सेल डिवीजन के पहले, सेल डिवीजन के दौरान और सेल डिवीजन के बाद होता है इसे हम कहेंगे सेल साइकिल। ठीक है बेटा, सो स्टेजेस ऑफ सेल इन विच सेल पासेस from one division to the next is called as cell cycle. That means I can also call this as the space between 1m, that is 1m phase to next m phase. यानी m phase 1 से m phase 2 के बीच का जो gap period रहेगा, that can also be called as one cell division. Are we clear up to here बेटा? इसके अलावा वो बता रहा है कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन एंड न्यूक्लियस को सेपरेट करना होता है। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाएंगे और उन क्रोमोसोम्स को डॉटर न्यूक्लियाई में सेपरेट कर दिया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, व्हिच इज सेल साइकिल।